Assalamu alaikum to all dear students. This is your lesson of computer science, and today, as you all know, that we were doing the drawing. So let's complete the drawing once again. So here we are going to draw a beautiful car. So it will be very interesting for all of you. So for that purpose, we should use we will use different types of shapes. So can anyone tell me what is the basic shape we should choose if we want to draw a car? Right, I have to select first of all the circle, and then I will take line tool and I will make more lines so that it will look like a wheel. It will look like a wheel of car. So again I will make one more line, एक और लाइन मैं ड्रा करूँगी. Similarly I will draw one more line so that it will look like a wheel. Okay, so at the end I will complete this line in this way. Okay, and then I will make a hole. If you want to erase the unwanted area, then you can use eraser tool. Now I will make a hole inside this wheel, so I will use circle shape. This is your boundary of wheel, and then I will choose one more circle with white fill color so that it will look like a wheel. Is it clear? Okay, can anyone tell me, should I make one more wheel or should I copy this wheel if I want to make a one more wheel? Ahmed, can you tell me? Right, I will use select tool if I want to copy this wheel. So simply I will click on this option of select and I will choose a rectangular selection, and then I will select this wheel. So as you can see, I will just make it select again and I will to copy and I will paste it. You can also adjust the size by using resize tool. I will make a first of all line so that it will be look like a road, and then I will make one more wheel by doing copy paste the previous one. I will select this wheel and then I will do Control C and I will do Control V. Now I will do copy and paste so that it will so that our time will be saved. हमें बार बार इसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम इजीली सेव हो जाएगा. Similarly, now I will make line tool. I will choose line tool and I will draw a line so that it will be connected. Two wheels will be connected with each other. Now the basic thing what you have to do is you have to use curve tool. So I will draw curve tool if I want to draw upper part of the car. So I will make curve tool. Again I will just
बेंड इट अपवर्ड्स। इसको मैं ऊपर की तरफ बेंड करूँगी। सेंटर से आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऊपर की तरफ बेंड कर देना है सो दैट आपको एक कार टाइप इसकी शेप मिल रही हो। ओके, आफ्टर ड्राइंग द अपर पार्ट ऑफ द कार, नाउ वी विल ड्रॉ मोर लाइन्स। Fatma, can you tell me what is the use of pencil tool? Right, pencil tool is used if you want to draw freehand drawing. अगर आपने freehand drawing करनी है then you can use pencil tool. So for now I'm going to use one more curve tool. Again I will select curve tool to make the front side of the car. So now it depends on you what type of vehicle you want to make and what kind of shape you will choose. So now I will just select it again as a curve tool. Curve tool को मैंने straight ड्रा किया और उसके बाद मैं उसको ऊपर की तरफ बेंड कर दूंगी in this way so that it will look like a mirror of the car. Then again I will use the line tool. Line tool again I will choose and then I will make it complete the mirror of the car. Is it clear? Okay. So Faizan, can you tell me this is interesting or not? Right, this is very interesting. So again I will just choose curve tool और इसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ बेंड करूँगी in this way. And then I will select the other shape, that is your line tool. And then we will make it to the wheel और इसको हम wheel के साथ टच कर देंगे so that कि आपकी जो upper portion है वो complete हो जाए. Is it clear? क्या आपको interesting लग रही है? Yes or no? Right. So now let's make the back side of the vehicle. अब हम इसकी बैक साइड ड्रॉ करेंगे. So for the back side I will choose again the curve shape. So what we will do, I will choose again the curve shape and now we are going to make the back side of the car. Again I will choose line tool. आप line tool choose कर लें या अगर आपने curve shape choose करनी है then you can select curve shape. So again I will just make it bend towards downward and then I will make it to the wheel और मैं इसको wheel के साथ easily touch कर दूँगी so that कि मेरी जो मेन स्ट्रक्चर है कार का वो कंप्लीट हो जाए. Taha, this one is interesting or not? Right, this is looking interesting. So जब आपने प्रैक्टिस करनी है you can do this. आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं and then you can complete your drawing. Is it clear? Okay, so now let's make the doors of the car. अब हम कार के doors draw करेंगे. So for that purpose I will just choose again line tool. Again हमने line tool choose किया है and then we will make it downwards. इसको नीचे की तरफ bend किया है और इसको मैं bottom के साथ touch कर देंगे. So as that कि आपके पास ये एक तरह से back side complete है. So if you want to draw some other vehicle, for example if you want to draw a bus, if you want to draw
a beautiful scenery. Simply you just have to learn the basic use of curve tool. हम curve tool को easily किस तरह से use कर सकते हैं, because you don't have any copy or book with you, so just do the practice, complete your drawing, and then share the pictures with me in Google Classroom. Okay, so now I will just make the doors. I will choose line tool, and again I will draw here, and then now I will make the doors of the car. So I will just make it as complete. So now again I will choose, you can choose line or curve tool, whatever you want. So for now I'm going to choose line tool, और इसको मैं straight draw कर दूंगी, and then I will again choose line tool, and I will make it as the front door of your vehicle or your car, and then the back door of your car. Simply आपने लाइन टूल और पेंसिल टूल को यूज़ करना है, लाइन टूल, कर्व टूल और सर्कल टूल को, सर्कल शेप को. जस्ट यूज़ दिस शेप्स एंड कंप्लीट योर ड्राइंग. Okay, after that I will choose again curve tool, to make the second door of your car. So second door ड्रा करने के लिए again I will use line tool. I will just click on this option of line shape, that is basically not tool, shape. So similarly again I will choose your curve tool, और इसको आप, जैसे आपके पास किसी भी कार का दरवाज़ा होता है, आप उस तरह से उसको स्ट्रेट या कर्व की शेप में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Okay, so now after completing the second part, you can complete it. Okay, so now I will ask a question. Ahmed, can you tell me what is the use of fill with color tool? What is the use of fill with color tool? Right, fill with color tool is basically used if you want to fill color in your picture. अगर आपने अपनी किसी पिक्चर में किसी शेप में कलर फिल करना है, then you can do this with the help of fill with color tool very easily. So कलर करने के लिए आप fill with color tool को easily use कर सकते हैं. Is it clear? So now what is the use of magnifier? What is the use of magnifier? Right, magnifier is used if you want to make your image look bigger or smaller. अगर आपने अपनी इमेज को बड़ा करना है, उसका साइज़ ये छोटा करना है, then you can use magnifier very easily. Okay, so now at the end I will ask, what is the use of eraser? Right, eraser is used if you want to erase your unwanted area of your part. अगर अपने part का unwanted area इरेज करना है, जो कि आपको नहीं चाहिए, जो कि मिस्टेक से आपसे ड्रॉ हो गया, देन यू कैन डू दिस वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ इरेजर. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स मेक अ मिरर ऑफ योर कार. अब हम इसका एक मिरर डिज़ाइन करेंगे. अगेन आई विल चूज़ लाइन टूल. अगेन मैंने लाइन शेप सेलेक्ट किया, देन आई विल चूज़ कर्व शेप. कर्व शेप सेलेक्ट करने के बाद आफ्टर दैट आई विल सेलेक्ट अगेन कर्व शेप को मैंने चूज़ किया, एंड देन आई विल कंप्लीट द मिरर ऑफ द कार. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द front side of the car so that it will look like more nice. So now tell me, what is the basic use of color picker? Color picker का basic use क्या है? Fizan, can you tell me? Right, color picker is used if you want to pick a color from the previously made image and then you want to fill in the new image. आपने पिछली इमेज से
कलर उठा के न्यू इमेज में जब फिल करना है, देन यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ color picker. Is it clear? Okay, at the end we have text tool. Now what is the use of text tool? Hamde, can you tell me what is the use of text tool? Who can you tell me? Right, text tool is used if you want to type the name, if whatever you want to type, then you can do this with the help of text tool very easily. अगर आपने अपना नेम टाइप करना है तो आप टेक्स्ट टूल की मदद से इजीली टाइप कर सकते हैं, जो कि आपको उसकी शेप होती है ए की फॉर्म में, ठीक है, ए बना होता है या ए लिखा होता है. सो दैट इज़ योर टेक्स्ट टूल. सो आफ्टर दैट आई विल चूज अगेन लाइन टूल. I will select line and I will make the handle of door handle. And after drawing the door handle, again I will select line tool and I will make it. अगर आपका कोई ऐसा पार्ट जो कि ठीक तरह से ड्रॉ नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा से चूज़ करके अपनी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है. अगेन आई विल सेलेक्ट कर्व टूल एंड आई विल मेक इट द टॉप ऑफ योर ड्राइंग. अपनी ड्राइंग का टॉप पोर्शन ड्रॉ करने के लिए देन वी विल यूज़ कर्व शेप, राइट. सो सिमिलरली अगेन आई विल जस्ट मेक इट एज फास्टर. लाइन शेप मैंने चूज़ की है एंड देन अगेन आई विल चूज़ लाइन शेप एंड देन आई विल सेलेक्ट कर्व. सो कर्व के थ्रू मैं इसको बेंड कर दूंगी बैकवर्ड, पीछे की तरफ आप इसको बेंड करते हैं. और इफ़ यू वांट टू ड्रॉ सम अदर शेप, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट सम अदर शेप, देन यू कैन easily do this with the help of any other shape. Is it clear? Okay, so now अगर आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है ड्राइंग में कि आपने पहले ठीक ड्रॉ किया है और बाद में कोई मिस्टेक हो जाती है, देन सिंपली यू कैन डू दिस और करेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल Z. इसे आप अपने प्रीवियस वर्क को इजीली रीस्टोर कर सकते हैं. Now again I will just make it. If you want to draw some other line, some other shape, then you can easily make it and complete your drawing. Now let's start the color filling. So let me write here how to draw a car. So this is your text tool. With the help of text tool we can easily draw anything. आप कोई भी चीज़ easily टाइप कर सकते हैं with the help of text tool. So now I just take fill with color tool and I will fill color inside my car. So आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं. As you can see I have select here maroon color and green, right. So I will also fill the green color in the upper part of the car. And in this way I think my drawing is complete. Okay, if you want to choose some other color then you can select it. So I hope this lesson is clear to all the class. What you have to do now, you just have to open paint program. आपने paint program open करना है and then you have to draw any vehicle. You can draw a car, a bicycle or a bus or an aeroplane, whatever you can draw easily. Just complete your drawing, fill color in your drawing, type your name like मैंने यहाँ पर टाइप किया है स्क्रीन पर, how to draw a car. You have to type the title of your drawing and then type your name, class and section, and then you have to share the picture of your drawing with me on Google Classroom. So if you find any difficulty in this lesson, and then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. So just watch this lesson very carefully and complete your practice. Okay, Allah Hafiz.